गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो आपको पता है कि 15 मार्च को जो है वो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो मनाया जाता है, ताकि हम कंज्यूमर्स के बेसिकली राइट्स के बारे में हम जो है वो अवेयरनेस जनरेट करते हैं। तो इस दिन हुआ क्या था कि यूएस कांग्रेस में जो यूएस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर 1962 में, जॉन कैनेडी, उन्होंने कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात किया था। तो तब से ही जो है वो 1983 में फिर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है इसी दिन को ईयर जो है मार्क करने के लिए मनाया जाने लगा। और फिर 15 मार्च को हर साल जो है इसको मनाया जाने लगा है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर। अब इस डे को इसलिए मनाया जाता था कि कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता लगे, उनको पता लगे कि मार्केट अब्यूज़ क्या होती हैं, तो उनके बारे में वो अवेयरनेस जनरेट कर सकें और अपने आप को खुद को बचा सकें। तो इस साल का हमारा थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस, क्योंकि हमारे जो है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो कर रही हैं, तो हमको ट्रांसपेरेंट और एक फेयर सिस्टम चाहिए, और उसके लिए ही इसलिए इस साल का थीम ये फेयर डिजिटल फाइनेंस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिन्होंने रिपोर्ट दी है। रादर ये पूरी कंट्रीज़ में की रिपोर्ट देते हैं कि उस कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप की या एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं। तो जैसे अब ये सर्वे करते हैं और उसके ही बेसिस पर रिसर्च करते हैं, और ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर जो रिपोर्ट है ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है, वो निकालता है। तो इस साल की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी है वो 2021 में इंक्रीज़ हुई है। तो टोटल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी रेट जो है वो इंडिया में जो पिछले जो 2020 में अगर 5.3% था, तो वो बढ़कर अब 14.4% हो गया 2021 में। इवन जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनरशिप रेट है, जो मतलब ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं बिजनेस, वो भी अगर 5.9% था, तो वो 8.5% 2021 में हो गया है, ठीक है। सो अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो आपकी एक ऑटोनॉमस और नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, जो कि 1983 में बनाया गया था। कुछ बैंक्स ने मिलकर, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की मदद के साथ जो है वो इसको बनाया गया है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर द मेडिकल डिवाइसेस 2022। तो गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी जो है वो प्रपोज की है, ताकि इंडिया जो है वो हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस का इंपोर्ट कम कर सके, ठीक है। तो अब उसमें कुछ पॉलिसी में कुछ प्रपोजल्स रखे गए हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज करना। कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे? टैक्स रिबेट्स देंगे, रिफंड्स देंगे टैक्स के। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ाने का कहा है कि जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं एंटर करना चाहता, उसमें गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए। फिर अगर कोई मेडिकल डिवाइसेस बनाना चाहता है तो उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो उपलब्ध कराया जाए। तो ये जो है कुछ बेसिक प्रपोजल्स हैं। और भी कुछ प्रपोज किया गया, यस, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने प्रपोज किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स लेके आएंगे, क्योंकि हेल्थ केयर बहुत कॉस्टली है। तो इसलिए दोनों को ही साथ में काम करके जो है पब्लिक जो है गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर दोनों को साथ में काम करके ही हेल्थ केयर की नीड्स को पूरा करना पड़ेगा। फिर इसमें कहा गया है कि जो प्राइस कंट्रोल रिजीम है उसको हम जो है वो ख़त्म करेंगे, ताकि एक फ्री मार्केट इकोनॉमी आ सके हेल्थ केयर में, और इनोवेशन उसकी वजह से जो है वो इस सेक्टर में, मेडिकल डिवाइसेस के जो है सेक्टर में आ सके, ठीक है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया जो है उसकी पर कैपिटा स्पेंड जो है वो मेडिकल डिवाइसेस पर सबसे कम है वर्ल्ड में, लोएस्ट है। तो मतलब $3 सिर्फ हम खर्च करते हैं मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर, जबकि ग्लोबल एवरेज जो है वो $47 की है, ठीक है। और जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे डेवलप्ड नेशंस, यूएसए या फिर जर्मनी, ये तो 450, 425 या $325 जो है वो पर कैपिटा कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। अब इस पॉलिसी की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि 80% जो है मेडिकल डिवाइसेस का इंडिया इंपोर्ट करता है। तो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और हमने देखा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हो तो आप बाहर के जो वेगरीज़ हैं, जो बहुत सी बाहर के जो चैलेंजेस हैं, उससे आप जो है वो ख़तरे में रहते हो, ठीक है। जैसे रशिया के साथ हो रहा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। वैसे ही कोई पैंडमिक की सिचुएशन आती है तो सप्लाई चेन में जो है डिसरप्शंस आ सकती हैं, तो आपकी मेडिकल डिवाइसेस की जो ज़रूरतें हैं वो रुक सकती हैं। तो इसलिए ये पॉलिसी ये कह रही है कि इंडिया की इम्पोर्ट डिपेंडेंस हम जो है अगले 10 साल में 80% जो है अभी उससे कम करके हम उसको 30% पर लेके जाना चाहते हैं, और इंडिया को वन ऑफ द टॉप 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाना चाहते हैं मेडिकल डिवाइसेस के लिए बाय द ईयर 2047। तो यही एक्ट जो है, यही जो पॉलिसी है, ये कह रहा है कि बाय द ईयर 2047 10 से लेकर 12% का ग्लोबल मार्केट शेयर होगा इंडिया के पास मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस की सेक्टर में। और
ग्लोबल इंडस्ट्री जो है मेडिकल डिवाइसेस की 100 से 300 बिलियन डॉलर की होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो आरबीआई जो है उन्होंने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जो है वो अलाउ कर दिया है कि वो अपने हिसाब से जो है वो लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें एक ये केवियट डाला गया है कि ये नहीं हो कि आप जो है एक्सटॉर्शन के लेवल पर उतर आओ, मतलब बहुत हाई इंटरेस्ट रेट रखने लग जाओ। तो ये जो है उन्होंने कहा है कि आपके पास फ्रीडम है, ठीक है। तो अब कंपटीशन लाने के लिए ये आरबीआई ने किया है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आपस में कंपटीशन आए और इनकी एफिशिएंसी बढ़े, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। तो पहले तो देखते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो जो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं लो इनकम पॉपुलेशन को इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो लोन्स, माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो इंश्योरेंस। तो जनरली जो 1 लाख से कम के जो लोन्स होते हैं उनको हम माइक्रो लोन्स कहते हैं। तो ये जिन जिन लोगों को नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी जो है के थ्रू लोन्स नहीं मिलता है या क्रेडिट नहीं मिलता है, उनके लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस खोले जाते हैं, ठीक है। इवन इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। अब न्यू चेंजेस क्या है? न्यू चेंजेस जो हैं जो 1 अप्रैल से आएंगे, तो आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस लोन की डेफिनेशन को चेंज कर दिया और उसमें कहा है कि वो एक कोलेटरल फ्री लोन होगा और उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी 3 लाख रुपए से कम एनुअल इनकम है, ठीक है। तो इससे पहले जो है ये डेफिनेशन के हिसाब से ये इनकम का लेवल जो था वो 1.2 लाख फॉर रूरल बोरोवर्स था और 2 लाख फॉर अर्बन बोरोवर्स था, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ होंगी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, इनके जो ये माइक्रो फाइनेंस लोन्स की जो प्राइसिंग या इंटरेस्ट रेट्स हैं ये उनके बोर्ड जो है वो अप्रूव करेंगे, ठीक है। फिर जो है 3 लाख रुपए तक की लिमिट बढ़ाने का मोटिव ये है कि वो ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकें, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि 1 लाख तक की लिमिट के जो कस्टमर्स हैं वही, या 1.25 लाख या 2 लाख तक की लिमिट के जो कस्टमर्स हैं वही इनके पास आते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास। लेकिन आरबीआई जो है उन्होंने डेफिनेशन को चेंज करके जो है वो 1 लाख रुपए के और जो इनकम वाले लोग हैं उनको भी इस ब्रैकेट में शामिल कर दिया। तो इनके लिए जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इनके लिए कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो यूएस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने 200 मिलियन डॉलर्स की आर्म सेल्स जो है वो यूक्रेन के लिए अप्रूव कर दी है, जिसमें यूएस मेड स्टिंगर मिसाइल्स हैं। तो स्टिंगर मिसाइल क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें मतलब होता क्या है कि जो ट्रूप्स हैं आपके या जो आपके मिलिट्री जो है पर्सोनल हैं या जो आपके आपके जो सोल्जर्स हैं वो अपने कंधे पर रखकर ही जो है एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर चल सकते हैं। मतलब मैन पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ? वो उसको लेकर चल सकते हैं। 10 से 20 किलो का ही होता है ये मैन पोर्टेबल जो है एयर डिफेंस सिस्टम। और इसको नीचे से खड़े होकर ही आप बड़े जो आपके जो लो लेवल पर जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं या कोई एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर है उसको आप उड़ा सकते हो, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो एरियल अटैक से बचाने के लिए ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको शोल्डर से भी आप फायर कर सकता है कोई सोल्जर, या कोई अपने ग्राउंड बेस्ड व्हीकल, कोई जीप में, कोई गाड़ी से, या इवन ट्राईपॉड से या स्टैंड से या हेलीकॉप्टर से भी या बोट से भी इसको फायर किया जा सकता है एरियल डिफेंस के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे हैं मैन पैड्स जो होते हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। जैसे यूएस में जो है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम उनका नाम स्टिंगर मिसाइल है, ठीक है। तो रशिया के पास कौन से हैं? इग्ला मैन पैड्स। स्वीडन के पास हैं RBS-70 मैन पैड्स और चाइना के पास भी अपने हैं, उसका नाम है FN-6, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संस्कृताइजेशन। तो ये एक टॉपिक है न्यूज़ में चल रहा है कंट्रोवर्सी के कंटेक्स्ट में, लेकिन हमको कंट्रोवर्सी में तो नहीं जाना, बट हमको ये टर्म पता होना चाहिए कि संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है। तो संस्कृताइजेशन एक ऐसी टर्म है जिसको MN श्रीनिवास जी ने अपनी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूग्स ऑफ साउथ इंडिया इसमें पॉपुलराइज किया था। तो संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, हायरार्की में, कास्ट सिस्टम की हायरार्की में जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जब वो सुपीरियर कास्ट, सो कॉल्ड सुपीरियर कास्ट या बड़ी कास्ट के जो लोग हैं उनकी सोशो कल्चरल बिलीव्स, वैल्यूज़, हैबिट्स, कस्टम्स या रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो समझ लो कि जो लोअर कास्ट हैं उनकी संस्कृताइजेशन हो गई है, ठीक है। तो मतलब उनमें डिफरेंस जो है और जो अपर कास्ट में उनमें डिफरेंस खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब कहा जाता है कि संस्कृताइजेशन को पहले सिर्फ क्या माना जाता था कि ये सिर्फ ब्राह्मणिकल वेज ऑफ लाइफ को अगर लोअर कास्ट अडॉप्ट करेंगी तभी उनकी संस्कृताइजेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में इस डेफिनेशन को जो है वो एक्सपैंड करके ये कहा गया कि
सिर्फ ब्राह्मणिक वे ऑफ लाइफ ही नहीं, कोई भी जो है डोमिनेंट कास्ट के किसी भी रीजन में जो जो भी डोमिनेंट कास्ट है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण्स ही हों। तो जो भी किसी रीजन में अगर कोई डोमिनेंट कास्ट है, अपर कास्ट है, उनके अगर रिचुअल्स को, उनके बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, हैबिट्स को अगर फॉलो करना शुरू कर देते हैं वहाँ की जो लोअर कास्ट के लोग, तो वो उनकी, हम कहेंगे कि उनकी संस्कृताइजेशन हो रही है। ठीक है, तो अब ये सही है या गलत, ये तो एक सेपरेट मैटर है। बट संस्कृताइजेशन को आप ये मत समझो कि ये एंटी कास्ट या कास्टलेस सोसाइटी है। ठीक है, संस्कृताइजेशन तो रादर जो है वो कास्ट को प्रमोट कर रही है, क्योंकि जो है लोअर कास्ट जो है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो है, उनको तो फोर्स किया जा रहा है कि वो अपर कास्ट के जो है वो रिचुअल्स को फॉलो करें, है ना। लेकिन एंटी कास्ट या कास्टलेस सोसाइटी जो कि एक आइडियल सोसाइटी है, उसका मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम को ही ख़त्म करना। वो एंटी कास्ट या कास्टलेस जो है वो सिस्टम में जो है वो का मोटिव होता है। ठीक है, तो अब इंडिया में संस्कृताइजेशन भी चलता है और एंटी कास्ट स्ट्रगल भी चलता है। तो इंडिया में दोनों तरह के लोग हैं जो ये भी एडवोकेट करते हैं कि जो लोअर कास्ट है वो अगर ऊपर अपर कास्ट की जो है वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एलिवेट कर लेंगे अपने आप को। और वो भी लोग हैं जो कहते हैं कि कास्ट सिस्टम ही घटिया है, कास्ट सिस्टम ही जो है वो सही नहीं है, तो उसकी डिस्ट्रक्शन करना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों स्कूल ऑफ थॉट इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is World Consumer Rights Day. So you know that on the 15th of March, globally we celebrate this World Consumer Rights Day. So the aim of this day is to acknowledge and recognize the rights of consumers. So we want to promote and make the consumers aware about their rights, and consumers must know when to raise their voice, and they must be able to identify the market abuses so that they can take action to ensure a safe and sustainable marketplace for everyone. So why this day is celebrated on 15th of March only? So the US President John Kennedy in 1962 addressed the US Congress, and he passed on a message about consumer rights on that during that particular address. So since 1983, the World Consumer Rights Day is marked on this very day of 15th of March each year. And this year the theme for World Consumer Rights Day was fair digital finance. So you know that digital financial services are burgeoning, they are increasing day by day, so we have to achieve a transparent and fair system when it comes to dealing with these digital financial services. So that's why the theme for this year was dedicated to digital finance. Okay, so the significance of this day is obviously to strengthen the rights of consumers only. Okay, so now let us the next topic, which is Global Entrepreneurship Monitor. So this Global Entrepreneurship Monitor is basically an international project which is seeking to provide information on the entrepreneurial landscape of countries. So it's a survey based research which is conducted by the Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad. And as per this Global Entrepreneurship Monitor report of 2021-2022, India's entrepreneurial activity has expanded in the year 2021 if we compare it with 2020. So the total entrepreneurial activity rate has increased to 14.4% in 2021, up from 5.3% in 2020. Similarly, the established business ownership rate in India has increased from 8.5% has increased to 8.5% in the year 2021 from 5.9% in 2020, the year 2020. So what is the meaning of established business ownership? So basically the adults or those who are into the business, and they are established in their business, they are owning and managing it perfectly, they are paying salaries and they are employing people, and they are doing their business for more than 42 months. So this is basically established business ownership rate, and it has also seen an increase in the year 2021 if we compare it with the year 2020. So about the Entrepreneurship Development Institute of India, it's an autonomous and not-for-profit institute which was set up in the year 1983. It is of course promoted by apex financial institutions like IDBI, IFCI, ICICI, SBI, and it has also got support from the government of Gujarat. That's why it is based in Ahmedabad.
So the next topic is draft national policy for the medical devices 2022. So the Department of Pharmaceuticals has proposed a new policy to reduce India's dependence on import of high-end medical devices. So there are several proposals how we can deal with this issue of medical devices import in India. So we must incentivize the export of medical devices in India through tax rebates and refunds. Even the government spending in high risk projects must increase. A single window clearance system must be there so that licensing of medical devices become easy. Okay, so several other suggestions have also been given, like we must enter into public private partnerships. So because healthcare is a costly endeavor, so we have the government has to participate and partner with the private sector to take care of the needs of the healthcare sector. So under the policy, the government also is proposing to get rid of the price control regime in this sector, so that free market forces bring out innovation in this sector. So the policy also aims to increase India's per capita spend on medical devices too, because we currently have the lowest per capita spend on medical devices. We just spend $3 per capita on medical devices, whereas the global average stands at $47. So just don't forget about the developed countries. They are spending $415 as so this is the uh, amount that US spends per capita. Germany is spending $313 per person per capita. So forget these getting ourselves to match this level. We are not even spending the global average, that is $47. So that's what the government wants to do. The government wants to reverse this trajectory in favor of medical devices industry in India. So what is the need of such a policy? Because we are importing currently the medical devices, we are almost importing 80% of the medical devices in the country. So you know that there can be supply chain disruptions, there can be situations where you could be sanctioned by some other country, like China can someday sanction us with the critical products. So to avoid all this, it is very important to be Atmanirbhar or to be self-reliant in this sector. So that's what the government wants to do through this policy. So currently we are importing about 80% of medical devices, but the government wants to bring it down to 30% in the next 10 years. And it also wants that the country should be one of the top one should be in one of the top 5 global manufacturing hubs for medical devices by the year 2047. So as per this paper, by the year 2047, India will be having a 10 to 12% of global market share in the medical devices sector, and the total uh, strength of the industry globally would stand between 100 to 300 billion dollars. So now let us see the next topic, which is microfinance institutions. So Reserve Bank of India has allowed microfinance institutions to fix interest rate on loans. Of course, there is a caveat here that these rates should not be extortionate level. They must be rational, of course. So what are the microfinance institutions? So these are the institutions which offer financial services to low income population. Such services like micro loans, micro savings, and micro insurance are provided to these people. Small loans are given to those people who cannot access banking facilities. So generally a loan below the level of 1 lakh rupees is considered as micro loan in India. Even the interest rates which are charged from these people are lower than the ones charged by the normal banks. So what are the new changes? So these changes will come into effect from 1st of April, and RBI has tweaked the definition of this microfinance loan. And according to the new definition, a collateral free loan given to a household with annual income of up to 3 lakh will be considered as a microfinance loan. Earlier the upper limits were 1.2 lakh for rural borrowers and 2 lakh for urban borrowers. Okay, so after revising this definition to 3 lakh income cap, uh, the RBI wants to expand the customer base of microfinance institutions. Okay, so this RBI is saying that the board must approve the policy of on pricing of these microfinance loans and ceiling on interest rate, and only after that this microfinance institutions can alter their schemes.
So now let us see the next topic, which is man portable air defense system. So recently, US President Joe Biden has approved a 200 million arms package for Ukraine, which would also include air US made Stinger missiles. So these are basically man portable air defense systems which a soldier can carry on his shoulder and fire it at the aerial target. It can destroy an aircraft or a helicopter. So basically any aerial threat can be neutralized from this man portable air defense system. So they are short range, lightweight, and portable surface to air missiles. They can shield troops from aerial attacks. These can be fired from the shoulder of the soldiers. They can also be launched from a ground vehicle or a tripod or a stand, and even from a helicopter or boat. Okay, so generally they are between the weight of 10 to 20 kilometers, so that soldiers can carry it on their shoulders, and they are not generally more than 1.8 meters long. Okay, so there are several kinds of man pads in the world. The US has this Stinger based missiles. They are man pads. Russia has this Igla man pads. Sweden has its own RBS 70, and China has its FN6. Okay, so all these are man pads. So now let us see the next topic, which is sanskritization. So this topic has been in news due to several controversies with respect to caste. We do not need to go into the controversy, we just have to see what is the meaning of this term sanskritization. So this term was actually coined by M.N. Srinivasji in his book Religion and Society Among the Cougs of South India. So sanskritization basically means a change in the hierarchical caste system. So it is a case in which certain lower castes are able to elevate themselves by adopting or emulating the socio-cultural beliefs, values, habits, customs, and rituals of the higher castes. Okay, so earlier it was only believed that sanskritization means lower castes adopting brahminical way of life, but later on the definition was expanded to include lower caste people adopting or emulating any dominant caste practices, so as to elevate themselves up to that category. Okay, so is it correct or not? That's a separate debate. Of course it is not correct, but that is a separate debate which we are not going to indulge ourselves into which we are not going to indulge ourselves into today. We are going to just see the topic as it is. So let us also compare it with anti-caste politics. So sanskritization is not does not mean that you want to remove the caste system. Anti-caste system or anti-caste politics or casteless politics is the real um, uh, is the real politics in which you seek destruction of the caste system. Sanskritization is basically adopting the socio-cultural beliefs or values of the upper caste system by the lower caste people. So it is basically perpetrating the caste system. Okay, but in anti-caste or casteless socio-politics, the proponents actually seek the destruction of the caste system, which is considered as the evil. Okay, so in India both kind of struggles are there. We can see both kinds of movement, sanskritization as well as anti-caste struggles going together. So we do not want to go into what which one of them is better or not. That's a matter of separate debate, like I've told you. So this topic was in news, so we just had to see what this term sanskritization means. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.